Hey guys, welcome you all. Welcome back to my channel Snehu Era. This video is going to be about the backlog. In last 2-3 months, I'm doing some laziness, not studying properly, so I gained a major backlog on my study. So now I'm deciding to complete my backlog, and as you know, classes are going on, and I'm deciding to go with the classes and completing my the. So here is the strategy which I follow for myself, and if you want you can follow the same strategy. If you don't, so you can make slightly changes as per your subject, as per your chapter, as per your backlog. You can follow the plan, depends on what chapter you have backlog. So let me explain you how I am managing my backlog. Now I am dividing backlog into two categories. One is current backlog, means जो चैप्टर अभी चल रहा है, या एक दो चैप्टर का बैकलॉग हो चुका है, या फिर अभी फेस्टिवल्स थे, रक्षाबंधन या कुछ रीज़न से कारण आपके बैकलॉग हो चुके हैं, तो ये वो बैकलॉग है. कुछ चैप्टर्स का बैकलॉग जो करंट गोइंग ऑन चैप्टर के साथ आपके लेक्चर मिक्स हो चुके हैं, ये वो बैकलॉग है. इसमें हम वो चैप्टर्स लिखेंगे. एंड अनदर इज़ मेजर बैकलॉग, जो प्रीवियस चैप्टर्स जो आपके बैकलॉग पेंडिंग है, ये वो बैकलॉग है. So these are the two category I am dividing the backlog: current backlog and major backlog. I am explain what chapter we have to add in this. In major backlog we have to add our old जो chapter left हो चुके हैं, the whole chapter which you never done, so you should put in major backlog. We handle both the backlog at the same time. And current backlog which you कभी किसी कारणवश, नॉट कारणवश, टू टिपिकल हिंदी, बट कोई चैप्टर आपके किसी रीज़न के कारण छूट चुका है अभी जो करंट चल रहा है उस चैप्टर के साथ, तो दैट कम इन अ करंट बैकलॉग सेशन. सो these are the total lecture, 82 lecture total, and these are the 20 lecture plus 2 the current lecture plus 2, मतलब जो अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है उनके एक एक लेक्चर, 2 लेक्चर, ये टोटल लेक्चर है इसके. Now I am making the plan in front of you how I'll complete this backlog. Now guys, these are the chapter. I know it's too much pending lectures, but I will do it and I can do it. I only follow this motto: I can do it. This lecture. So here the chapter. बॉटनी में मैंने अपने पुराने बैकलॉग्स तो कंप्लीट कर लिए थे, तो बॉटनी में मेजर बैकलॉग नहीं है. 2 चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड जूलॉजी एंड ब्रीथिंग. जूलॉजी के 2 चैप्टर है. ब्लड मैंने कंप्लीट कर चुका है, और एक्सक्रीशन अभी चल रहा है जिसके 6 लेक्चर पेंडिंग है. आई नो टू मच लेक्चर आर पेंडिंग. एंड फिज़िकल केमिस्ट्री मैंने कुछ नहीं किया. आई ऑनेस्टली से टू यू, मैंने कुछ नहीं किया, बट आई कैन डू इट. आई कैन कंप्लीट दिस बैकलॉग बिकॉज ये चैप्टर मैंने पहले पढ़ चुके हैं, तो मेरे को लेक्चर लेने में इतनी मुश्किल नहीं होगी. मेरे पास पुराने ईयर के नोट्स एंड क्वेश्चंस भी हैं, बट आई वांट टू टेक लेक्चर बिकॉज लेक्चर लेने से अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है तुरंत, और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको समझ आ जाता है कि हाँ ये है. कॉन्सेप्ट्स तो मेरे क्लियर हैं, बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो हम भूल जाते हैं बिकॉज एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एनवायरनमेंट, मतलब सराउंडिंग ऐसा चेंज हो जाता है.
So now the plan is ready. I not make too detailed plan, but I will explain you. I do little messed up in the page. So on today's 15th of August, 15th, 16th, 17th, there will be no classes. I think so, because 15th of August, you know, Independence Day, 17th Sunday, and 16th maybe Janmashtami. There will be no class in these 3 days. So we will current our current backlog in these 3 days. From 18th of August we will start our current classes, and with the current classes we do our major backlog, so we don't affect with our current classes and with our backlog. So this is the plan. In 15th, 16th, 17th there will be total 20 lecture. Total 20 lecture and plus 2 the current started chapter lecture, so total 22 lecture. So 15, 16, 17 you have to take 7 lecture, because classes तो है नहीं इस दिन, तो हमको 7 lecture लेने हैं, because we have to complete our current backlog. So on Monday onwards we have to take our regular classes on the batch going on. So we have to complete our lectures by taking 7 lecture each a day. I'll explain you how I'll do it. And on 18th to 16th we are completing our major backlog in just 20 days. So here's the plan. Total 82 lecture divided by 20 days. So you have to take one day 4 lecture, and plus with classes. So this is the plan, what I am doing with how I am completing my backlog. You just know what I'm planning for my backlog. So if you like the planner, you can follow if you want. At the last I post the image on the video. You can took the screenshot what I planned. Thank you so much for watching this video. If you like my strategy, the backlog strategy plan, so please tell me on the comment section, and like the video and subscribe my channel for more such this kind of video. See you soon on the next video.